OTET 2018 पेपर 1 पाई जो माने प्रिपरेशन होचंती तांको पाई आमे आज इंग्लिश सब्जेक्ट उपरे पेडागोजी रे 25 टी क्वेश्चन नै आसीछु। नमस्कार मु अभिनंदन आपनको स्वागत करूची ओडिशा W.L.O यूट्यूब चैनल को। आसंतो वीडियो टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं शेयर करिया को जमार भी भूलंतु नाही। आसंतो वीडियो टी को आरंभ करिबा। प्रथमे आमे क्वेश्चन नंबर 1 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 1 कहूची The study of English as a subject was made compulsory by option A the Oates Dispatch, option B Sergeant Report, option C the Macaulay Minutes, option D Haddock Committee. आउथर ऑप्शन देखो ऑप्शन A the Oates Dispatch, option B Sergeant Report, option C the Macaulay Minutes and option D Haddock Committee. एवं यार सठिक उत्तर कहूची ऑप्शन C the Macaulay Minutes। वर्तमान प्रश्न नंबर 2 को जिबा। प्रश्न नंबर 2 कहूची इंग्लिश इज ए मदर टंग ऑफ ऑप्शन ए 500 मिलियन पीपल्स इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी 300 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी 10 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एंड ऑप्शन डी 160 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 300 मिलियन पीपल्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूची The study of English language is compulsory because it is option A the link language, option B the library language, option C the language of trade and commerce and option D all of the above। आउथर ऑप्शन ए कहूची ऑप्शन ए the link language, option B the library language, option C the language of trade and commerce and option D all of the above and the right answer is option D all of the above। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 4 कहूची इंग्लिश इज वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑप्शन ए द U.N.O, ऑप्शन बी द W.H.O, ऑप्शन सी द W.T.O, ऑप्शन डी द W.L.O and the right answer is option A the U.N.O। U.N.O means United Nations Organization। बर्तमान आमे क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 5 को pronunciation is more important in the skill of option A listening, option B speaking, option C reading, option D writing and the right answer is option B speaking। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 6 कहूची the phrase English as a library language only implies that option A English ought to be read in library, option B most of the books in the library are English, option C it necessary to read periodicals written in English, option D the skill of reading would be paid much more attention than the other and the right answer is option D the skill of reading would be paid much more attention than the other। बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 7 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 7 कहूची मोस्ट इनपुट्स इज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम फ्रॉम ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी रीडिंग एंड ऑप्शन डी राइटिंग एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रीडिंग। बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 8 कहूची फोनेटिक्स और द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन डील्स विद द स्किल ऑफ ऑप्शन ए करेक्ट लिसनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट स्पीकिंग, option C correct reading and option D correct writing and the right answer is option B correct speaking। बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 9 कहूची pause is necessary while option A listening and speaking, option B speaking and writing, option C writing and reading and option D speaking and reading and the right answer is option D speaking and reading। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 10 कहूची राइटिंग स्किल इज द एबिलिटी टू राइट इंग्लिश, ऑप्शन ए ब्यूटीफुली, ऑप्शन बी करेक्टली, ऑप्शन सी एलिगेंटली, ऑप्शन डी स्मूथली एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी करेक्टली। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 11 कहूची डैश इज ए मोटर स्किल, डैश इज ए मोटर स्किल, ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, option C reading and option D writing and the right answer is option D writing। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 12 कहूची रीडिंग स्किल्स
Reading skills plural help student for the habit of reading dash. Option A for pleasure, option B for information, option C for pleasure and information, option D for understanding. And the right answer is option C for pleasure and information. बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 13 कहूँ माइंड आईज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर. माइंड आईज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी रीडिंग एंड ऑप्शन डी राइटिंग. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी राइटिंग. देन क्वेश्चन नंबर 14 says speaking skills or competency deals with the ability to speak dash. Option A cleverly, option B beautifully, option C intelligibly, and option D comfortably. And the right answer is option C intelligibly. बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 15 कहूँ the most important failure of good handwriting is. The most important failure of good handwriting is option A uniform stroke, option B legibility, option C uniform shape, and option D equal shape. And the right answer is option B legibility. बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 16 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 16 कहूँ the act if following directions given orally deals with dash. Option A reading skills, option B writing skills, option C listening skills, option D speaking skills. And the right answer is option C listening skills. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 17 को जीवा. While reading the primary role is played by dash. While reading the primary role is played by option A lips, option B mind, option C tongue, option D eyes. आउथर ऑप्शन रे कहूँ ऑप्शन ए लिप्स, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी टंग एंड ऑप्शन डी आईज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आईज. बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 18 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 18 कहूँ यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी ग्रामाटिकल आइटम्स इज कनेक्टेड विथ. ऑप्शन ए लिसनिंग कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन बी राइटिंग कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन सी reading competency, and option D speaking competency. And the right answer is option B writing competency. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 19 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 19 कहूँ gesture and postures are used in option A listening, option B speaking, option C reading, and option D writing. And the right answer is option B speaking. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 20 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 20 कहूँ लैंग्वेज लर्निंग डील्स विथ द स्किल ऑफ. आउथर कहूँ प्रश्नटी लैंग्वेज लर्निंग डील्स विथ द स्किल ऑफ. ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 21 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 21 कहूँ यूजिंग कॉमा कॉलन एंड फुल स्टॉप इज नॉन एज. comma colon and full stop is known as. Option A punctuations, option B articulations, option C intonation, and option D stress. And the right answer is option A punctuations. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 22 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 22 कहूँ प्रॉपर आई स्पान इज नीडेड फॉर. आउथरे कहूँ क्वेश्चन टी प्रॉपर आई स्पान is needed for. Option A reading, option B writing, option C speaking, and option D listening. And the right answer is option A reading. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 23 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 23 कहूँ an example of multilingual skill is. Option A listening, option B speaking, option C reading, and option D writing. And the right answer is option C reading. Reading is the right answer. बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 24 कहूँ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ग्रुप्ड एज डैश. स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ग्रुप्ड एज डैश. ऑप्शन ए एक्टिव स्किल्स, ऑप्शन बी पैसिव स्किल्स, ऑप्शन सी सेमी एक्टिव स्किल्स,
and option D semi-passive skills, and the right answer is option A active skills. Speaking and writing are grouped as active skills. बर्तमान क्वेश्चन नंबर 25 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 25 कहूँ सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन ऑप्शन ए गिविंग पॉज, ऑप्शन बी कॉम्प्रहेंसिव, ऑप्शन सी आर्टिकुलेशन, ऑप्शन डी सेंसिटाइजेशन। आउट कहूँ ऑप्शन गुड़िक ऑप्शन ए गिविंग पॉज, ऑप्शन बी कॉम्प्रहेंसिव, ऑप्शन सी articulation, and option D sensitization, and the right answer is option B comprehensive. Comprehensive is the right answer.